Okay, good morning children. Classification of elements and periodicity in properties part 6. Isoelectronic species. Though we have discussed it previous, but you see what are isoelectronic? Iso means same, electron means electron. So the atoms and ions having the same number of electrons are known as isoelectronic species. समझ में आया? Like here some ions are written O2 minus. So what is O2 minus beta? How many electrons will be there? Oxygen 8 electrons, but 2 minus यानी 2 more electrons, so total electrons are 10. F minus, F में कितने होते हैं atomic number? 9, so 9 electrons. 1 minus है, so 9 plus 1, 10 electrons. Sodium, how many electrons? 11 electrons, but 1 electron is lost, so it is 10 electrons. Mg2 plus, Mg 12 electrons, 2 electrons are lost, so how many electrons are left? 10 electrons. So you see, they 4 are isoelectronic. Understood? Same electrons. So if someone will ask you, write the isoelectronic species, you can write. But their radii will be different. उनकी साइज जो है रेडियस अलग अलग होगी. एटॉमिक रेडियस विल बी डिफरेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अर्लियर वी हैव रेड दैट द मोर कैटायंस जो होते हैं पॉजिटिव आयंस वो स्मॉलर होते हैं. द मोर पॉजिटिव चार्ज द स्मॉलर विल बी द आयन. वाई? बिकॉज इफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, so more protons will attract those less electrons, so size will be shorter. Yes, size will be smaller. So here, though they all are isoelectronic, but the smallest will be Mg2 plus and the largest will be O2 minus. Why it will be largest? Because more number of electrons are there, right? The cations with greater positive charge will have the smaller रेडियस. क्लियर है? जितना ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा इतना स्मॉलर रेडियस होगा. द एनायंस विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव ग्रेटर रेडियस. बिकॉज क्यों ग्रेटर होते हैं? क्योंकि एनायंस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो नेट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर एंड द नेट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज. आउटवे मतलब दो तरह के फोर्स हैं. एक तो न्यूक्लियर चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है. तो कौन जीतेगा? दैट विल बी डिसाइड द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस. सो व्हाट हियर, व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो नेट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और वो जीत जाता है, विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड सो द आयन विल एक्सपैंड इन साइज. इसलिए आयन्स आर ग्रेटर इन साइज. One example is given in our book, that is Mg, Mg2 plus, Al, Al3 plus. The question is which one is smallest and which one is largest. So they both are, Mg and Al, they both are in the second period. ठीक है? तो second period में है, but what happens? So Al and Mg both are in third period है ना, third period में. So what happens? Mg group 2 में and Al p block element है. So what happens in the same period when we move from left to right, the atomic size shrinks. छोटा होता जाता है. यानी Mg will be the largest. तो can I write here? Mg size largest. Why largest? If someone will ask you, you will tell that they both are in the third period, but Mg is on the left side. So when we move from left to right, the size shrinks. So Mg size will be largest. Then comes Al. Al से छोटा होगा Al3 plus because 3 electrons are lost. So smallest कौन हो गए? Al3 plus. In this question only these two were asked. Which one is largest and which one is smallest? So Mg size is largest and Al3 plus is the smallest. Then comes ionization enthalpy. What is ionization enthalpy?
द मिनिमम एनर्जी, एकदम ईजी है अंडरस्टैंड करना. एंथैल्पी मीन्स एनर्जी. ओके, सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a gaseous element in neutral state is known as ionization enthalpy. Okay, like X. So X will release one electron, so it will become X plus electron. Do you see here? X plus electron. So ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर देता है. Some energy is to be provided. That energy to convert it in an ion is known as ionization enthalpy to remove the outermost orbit electron. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला ना बेटा, तो उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आई एच. याद रहेगा अगर. सो हियर वी सी द एनर्जी इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. Unit of ionization enthalpy will be same, that is the unit of energy, that is kilojoule per mole. Correct? The energy required to remove the second electron is known as second ionization enthalpy. ये ध्यान देना हमेशा कि second ionization enthalpy is always bigger than या greater than first ionization enthalpy. What happens? Three friends are sitting together. First friend you have removed. So rest of the two friends will sit more strongly with stronger bond. So it will be difficult to remove the second friend. Similarly, when one electron is lost, so less electrons are left. One is already lost. So rest of the electrons will be held tightly together by the nucleus. Nucleus का जो effective nuclear charge है वो ज़्यादा हो जाएगा अभी कम इलेक्ट्रॉन के लिए, because one electron is already lost. So there needs more energy to remove the second electron. Understood? So here you have written also X plus ion. पहले से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इट हैज़ बिकम X2 plus and one more electron is lost. So delta IH3, that is third ionization enthalpy, is always bigger than first second ionization enthalpy, and it is always bigger than first ionization enthalpy. Is it clear to you all? Then comes what is the role of shielding effect. Shielding effect क्या होता है? बीच के इलेक्ट्रॉन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हिंडर करते हैं, कर्टेन डाल देते हैं, शील्ड डाल देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. इफ वी मूव अक्रॉस द सेम पीरियड, दैट इज सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. सो the first ionization enthalpy is in this order. You see, smaller to greater. बीच में एक दो प्रॉब्लम आया है, that we will discuss afterwards. Chemistry is all about exceptions. So here we see exceptions we will read afterwards. First we will see that first ionization enthalpy is smaller in lithium and greater in noble gas, that is neon. Noble gas का तो अलग ही होना है, because noble gas has complete configuration. So it is very difficult to remove the electron from the noble gas. So ionization enthalpy is higher, right? Rest others may, if we see smaller to greater, then easy to remove the electron from lithium in comparison to fluorine. Fluorine में बहुत ज़्यादा ionization enthalpy है. Why it happens? Because in the same period, when we move from left to right, the atomic size shrinks. हमने पढ़ा है. Number of electrons are increasing and atomic size is shrinking, है ना. atomic radius छोटा होता जाता है लेफ्ट टू राइट में. Why? Because number of electrons are increasing, but they are in the same period. आया समझे? When we move from lithium to fluorine, the electrons are being added to the same orbital in the same principal quantum number level 2. quantum number level क्या है? सेकेंड. तो उसी सपोज करो एक ही बेंच पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो क्या होगा? शील्डिंग विल बी क्रिएटेड, बट दिस शील्डिंग इज नॉट इंक्रीज्ड वेरी मच. कौन जीता? देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स. वन इज शील्डिंग इफेक्ट एंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज. सो न्यूक्लियर चार्ज इज मोर in this. When we move from left to right in a period, the nuclear charge is more.
dominant. So nuclear charge outweighs the shielding effect. दो ही थे contestant, तो कौन जो जीतेगा वो ज़्यादा impressive होगा. So nuclear charge, increasing nuclear charge, because electrons are increasing, so nucleus has to put extra effective nuclear charge to attract those electrons. So it outweighs the shielding effect. So outermost electrons are held more tightly. जितना tightly होंगे उतनी ज़्यादा energy लगानी पड़ेगी. So the ionization enthalpy increases across the period. Same period I am talking. But when we move down a group, up to down, ठीक है, in a group, top to bottom, the outermost electrons are there, but number of period is also increasing. If you notice, group में कैसा होता है 1s, 2s, 3s, ऐसा ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार्दर होते जाते हैं, फार्दर यानी दूर. एंड इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इनर लेवल्स. जितने ज़्यादा उसमें रूम बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा. तो अगेन टू कॉन्टेस्टेंट्स आर देयर, इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज, बट हियर shielding effect dominates. So here increased shielding effect outweighs the increased nuclear charge, and so less energy is needed to remove the outermost electron. Clear? Then comes exceptions. If you notice, we have written already. So beryllium and boron. Beryllium and boron, they are in the same period. But beryllium atomic number is 4 and boron is 5. Beryllium needs 899 kilojoule per mole first ionization enthalpy. Boron में 801 kilojoule per mole. होना क्या चाहिए था, 5 वाले का ज़्यादा होना चाहिए था ionization enthalpy, but it does not happen. So this is in the exception. What is the reason? If you write the configuration, beryllium will be 1s2 2s2. Boron will be 1s2 2s2 2p1. Okay, so what we see, s orbital electrons are more penetrated towards the nucleus. Okay, ज़्यादा tightly bound हैं. But 2p1 जो इधर extra है, that electron will face shielding of the inner core orbital electrons. So it is easy to remove the 2p1 electron. When it is easy, so less energy is needed to remove the 2p1 electron. Therefore, ionization enthalpy of boron is less than beryllium. Then comes same period में nitrogen and oxygen. Nitrogen 7, oxygen 8. होना किसका ज़्यादा चाहिए था, ऑक्सीजन का. But here we see nitrogen is 1402 kilojoule per mole and oxygen is 1314 kilojoule per mole, 1314 kilojoule per mole. First we will write the configuration. So 1s2 2s2 2p3. So if you notice 2p3 अगर हम ऐसा लिखते थे ना, 2px 2py and 2pz, but here if I write, so 2p only I am writing, so 2p4 2px 2py 2pz, and fourth electron will be here with the opposite spin. Clear? So what happens here, electron repulsion will be more. दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए 2px में, so electron repulsion will be more in oxygen. Okay, so when more repulsion will be there, तो less energy लगाते ही ये वाला फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. Understood? So it is easier to remove the fourth electron from the oxygen. Therefore, its ionization enthalpy is less than nitrogen. So these are the exceptions. This question is also in the exercise. You have to write the answer. Okay. Now I will tell you. If you see this graph, this variation of first ionization enthalpy, that is delta IH, with atomic number for elements number Z from 1 to 60, 1 से 60 तक के सारे elements का plot किया है. So if you see the maximum ionization enthalpy
is of noble gas. Can you see children here? Lithium, helium, neon, argon, krypton, xenon. ठीक है. So maximum ionization enthalpy will be of noble gases. Why? Because noble gases we know that they have the closed, their octet is complete. Okay. So it is said that they have the closed electron shells and they have the stable electronic configuration. तो जो क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स है तो उनके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. Therefore it is on the maximum side. Whereas the lowest first ionization enthalpy is of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Why it is less? Because it is easy to remove the outermost electron of these elements. They have the configuration NS1 type. ठीक है. So it will be easy to remove that electron from the outermost orbit. Fine. Then another graph is there when we move in the same period. Okay. So lithium, beryllium, nitrogen, then lithium, beryllium, boron, then carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So in the same period the ionization enthalpy is in the increasing order when we move from left to right. The reason behind this is in the same quantum number level and the same period में number of electron only is increasing. So number of electron is increasing. So nucleus से जो charge लगता है effective nuclear charge that overweighs the shielding effect that I have told you right now. Same way when we move from top to bottom in a group. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium you see. So ionization enthalpy is in increasing order. ठीक है. फर्स्ट वन इज सबसे ज़्यादा किसका होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 लिथियम का. फिर देखो धीरे धीरे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जा रहा है. क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज यू नो कि क्वांटम नंबर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है. पीरियड जो है इंक्रीज हो रहा है ना 1s 2s 3s 4s एंड ऑल. सो इलेक्ट्रॉन्स आर बिकेमिंग फार्दर एंड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस. और इन दोनों की लड़ाई में हु विंस? The screening effect is there, shielding effect is there. Of shielding effect means inner orbital के इलेक्ट्रॉन का आपस में repulsion, that is they create shielding. Repulsion भी है और shielding भी है. So that force wins. That force outweighs the nuclear charge, effective nuclear charge. Therefore when we move from top to bottom in a group, ध्यान से देखना ऊपर लिथियम का 520 और सीजियम का 374. So what happens when we move from top to bottom in the same group? The ionization enthalpy is decreasing order. Period में increasing order and group में decreasing order. ध्यान रहेगा? Okay.